if you are starting out as a fresher or starting a new job और आपने जॉब स्विच करा है या फिर आप किसी भी फेज में हो या फिर आप इनिशियल ईयर्स ऑफ योर करियर हो, आप सीनियर टू मिड लेवल प्रोफेशनल हो, then this video is for you. Because I am going to share 5 things which you need to do in your organization which will make you uncomfortable but will definitely be beneficial for growth. So stay tuned. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. 5 important things that you need to do in your job which might be very uncomfortable but would be very beneficial for your growth. As what I have learned in my corporate journey, and that's why I'm sharing with you. Number 1, visibility is the key. I know आपको लगता होगा कि मेरा हाइब्रिड वर्क एनवायरनमेंट है या फिर आई विल प्रेफर वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब, बट दैट्स द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इन योर इनिशियल ईयर्स एटलीस्ट. कुछ भी हो, मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ऑफिस जाओ. इफ अगर आप अपने होम टाउन में, आपके होम टाउन में आपका ऑफिस नहीं है एंड योर्स इज इन हाइब्रिड, इवन आप 1 मंथ में अपना कंप्लायंस पूरा करने जाओ, बट शो योर प्रेजेंस, बी विजिबल. बिकॉज अगर आपकी विजिबिलिटी अच्छी है ना, देन आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी. बिकॉज एवरीवन नोज यू, एवरीवन विल रिकॉग्नाइज यू for who you are. So that is why your visibility is very important. Number 2, do not restrict your work to with just 1 or 2 people. Because जब team discussion होती है या फिर performance discussion होती है ना, there are 10-12 people in the team. I'm sure किसी भी team में 5-6 manager होंगे या 4-5 managers होंगे. So each of them will like talk about how was their experience to work with you or give feedback about you. But if you haven't worked with each of them, then only 1 or 2 person will speak for you, will vouch for you. Rest of them won't. So you never know कि कोई आपकी पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोल रहा है. That is why it is very important to work with different people in the team so that you have built a rapport with each and every one of the individual or each or every of the manager, senior manager, whosoever you are working with. That is why it is very important to work with different people in the team because it also increases your skills or showcase your presence. So that is why it is very important. Number 3, do not just focus solely on BAU. BAU are business as usual task. वो तो आपको करने ही है एंड वो आपको efficiently करने हैं, आपको अच्छे से करने हैं. But other than this, focus on other things as well. Participate in trainings, participate in team events, host trainings, जो भी आप कर सकते हो, आपकी रीच में है. पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा थिंग्स बिकॉज वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एंड विल हेल्प फॉर योर ग्रोथ. नंबर 4 इज हैव अ कॉन्वर्जेशन विद योर स्किप लेवल मैनेजर. स्किप लेवल मैनेजर क्या होता है? आपके ऊपर एक मैनेजर है एंड उनका एक मैनेजर है. सो you skip 1 level, that is your immediate senior, immediate manager, and then have a conversation with your skip level manager. बिकॉज इससे आपका खुद का बॉन्ड बढ़ेगा एंड उनको पता चलेगा आप क्या काम कर रहे हो. यू नेवर नो आपका सीनियर क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कैसे. आई एम श्योर दे माइट बी गिविंग गुड इन्फॉर्मेशन, बट फॉर यू टू बिल्ड recognition or gain the trust of other person, you have to have a conversation with your skip level manager. Keep it engaging. I'm not saying कि उनको बताओ एक एक चीज़ जाके. I'm not saying कि आप उनको CC में रखो हर एक email में. That's not required. But keep them informed. Be very smart. This is corporate. Everyone is working for their own growth. So आप ये सोच रहे हो कि हाँ, that person is thinking about me. Yes, definitely they would think about you, but they'll think about you after their own growth. So आपकी खुद की growth आपके हाथ में होती है and you have to work for your own growth. आपको खुद अपनी growth के लिए काम करना है, आपको खुद अपनी पहचान के लिए काम करना है. That's the major goal. And number 5th and most important is keep your technical strong. कुछ भी नया अपडेट आ रहा है, कीप ऑन रीडिंग दैट. अगर कुछ आप काम कर रहे हो उसके बारे में ज़रूर पढ़ो. स्पेंड एटलीस्ट 15 to 20 minutes every day for your learning because that is very important. आप काम कर रहे हो, आप सिर्फ रेप्लिकेट कर रहे हो कुछ प्रोसेस, बट आपकी खुद की ग्रोथ के लिए आपको अपने टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने हैं. दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू to read the technical and to understand it thoroughly.
That's it for this video. If you like this video, please give it a thumbs up and let me know in the comments कि आपको क्या topic चाहिए next, and I'll be happy to help. Thank you. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.